Okay, so I guess I'm live now. It's been 5 to 8 seconds that I'm live. So let me share my screen. So what I'm going to do in this live stream, actually, as you can see in the heading, I am going to try and do the lead code daily, and the language that I'm going to use is Python. And there are two things. One, I've bought a Udemy course that is helping me, that will help me to get better in lead code, and that course is also in Python. I can't show you the course right now uh, because I don't have the credential in my laptop, but it's in my phone. And another thing is one sheet I'm going to follow, and that sheet is Strivers DSA sheet. Okay, so it's not like I've not tried it once, but I'm starting to do it from the very basics. So I'll try and solve as much problems as possible. So I'll start by user input. I'm pretty much intermediate in this, but let's start from the scratch and try solving every problem that we face. I mean, that we encounter in all these 18 steps. I'll try to do lead code daily. There is no restriction. I mean, I'm not putting any restriction on myself to do some limited number of problems, but instead I'll do as much as I can, and जितना time मुझे मिलेगा उस हिसाब से. So let's say if we are going to do, let's start from scratch, and for that I'm going to use this, and this would be my lead code progress. So instead of finding, let's just go to the Striver A to the DSE sheet from learning to the basics, and I would like some problems to solve. Okay, so if there is a user input, let's see where it takes us. This is a lead code problem, right? Yeah, it is a lead code problem for input and output. So we'll just copy it, uh, copy link address and paste it here. Okay. It's not. Upgrade to this. So this problem is not from tough. Okay. So how to go to that link? I'm not sure. If I'm not going through, so I'm going to try it for free, obviously. So are there any lead code problems that I might just take you forward? So is this a lead code problem list, or just I don't know. I don't know. Let's go to the input output only, and I'll find this input output problem in lead code. Let's see if we can do that. Lead code. This is my lead code. As you can see, I've created a new ID for it, and there is no progress in this uh, profile. So it's just from scratch. I'll go to the problems and search for the input output question. Search question, input output. Okay, there is no question such as input and output. Mm, no, there is no question such as input and output. Uh, so where can we find the lead code resources are from here? Let's see. SD sheet. Can we find lead code problems? Yeah, yes. We can find. But that would be the problem, no? Because if we are solving SD issue, we are encountering lead code problems from the start. We don't actually want that. Instead, we, we thought that we were going to solve some problems on lead code on the basic level, which are not provided here. So let's do one thing. Let's visit them one by one. Okay.
And let's just read for the Python code only. Okay, so this is for the C++. I guess they have not created for Python. Hmm. What should we do? How should I approach this problem? Like, if I'm going to learn the input and output, obviously, uh, where should I solve this problem? No, this is the major. So, if we are going to solve it in this side, we have to upgrade to plus. So, I guess we just have to skip and start from the problem list that we show up on it. Okay, so this is the first problem that we have encountered to solve, and not on this, but let's practice it on Leetcode. Copy link address. I'll paste the link here to reverse an integer. I'll be doing it in Python. Okay, next. Okay, so the problem let's read the problem statement. Given a string of 32-bit integer x, return x with its digit reversed. Okay, if reversing x causes the value to go outside of the 32, I guess what we have to do is reverse the integer instead of C++. I'll choose Python 3, and inside it we have to write the solution. So I'm not good in Python. Okay, I'm just a beginner, or maybe uh, intermediate. I would say not intermediate, but an experienced beginner would be a good word. So let's start by thinking what I'm planning is to convert the integer into a string, then reverse that string, and then okay, what did I do? Then reverse that string, and then finally convert back to integer. Would this approach be a good approach or not? I'm not sure. Uh, let's do it. So I'll give it y is equals to mm, str, I guess, x. What would we do if we return x? Let's just run the test cases, no? Or maybe what I can do is online Python compiler just to see and run the things. Okay. So if there is a number x which says 1, 2, 3, and I am doing y is equals to strx, and what if I print y? Okay, so would it give me a string? Let's give the type of y. Is it correct syntax? Yeah, it is a string now. What I'm going to do is write a function def reverse rev. This will make string, in which I'll just provide a string. Okay, and in that what I'm going to do is let s is equals to f, or maybe n is equals to length of string. Okay,
and s is equals to 0, and then while s is less than n minus 1. Okay, s is less than n, I'll do string of s comma, I'll just swap. So the string of n is equals to string of n comma string of s, and I'll do s plus equal to 1 and n minus equal to 1. Would that work? I will return a rev, and I'll do r is equals to a rev y. I'll just print 1. Let's see. Print r. What's the issue? str object is not supposed to be item assignment. It's not an array. It's not an array, so obviously we can't uh, reverse it in that manner. So let's take some help, and we'll just read the docs, and optimal approach will read. We'll do okay. So instead of using strings, they are telling us to not use string and do some mathematics. So yeah, we can do that approach also, uh, in which we do a rev number and initialize it to 0. Okay, so let's see if there is another number 0, and while x is greater than 0, what we'll do, um, num is equals to x percent 10, y is equals to y plus num, x is equals to x by 10, and y is equals to y into 10. Let's do this, and after this let's print y. Okay, I'm getting inf. What is this? Infinity. Okay. So what? Well, x is greater than, so x is divided by 10 in every thing. No, what I'll do, I'll print x in every scenario and just keep this like this. So just to get k 12.3 now. So I don't want to get the point value. Instead, I want to get the integer value of this. Can I get it? Yes, I can. Okay. So that was the whole issue. So instead of getting this, I'm doing
this. I'll get 3 to 1. That was quite easy. So what I'm going to do is y is I am initializing a variable which is y is equals to 0. Then while x is greater than 0, it will run होगा, and in which I'm going to do y is equals to y into 10. Okay, then y is equals to y plus, then there is this num which is equals to x integer of x percent 10. Okay, and again then we'll do x is equals to integer of x by 10. Okay, I guess pretty much that was it, but there was an extra number. Num is equals to num percent 10, y is equals to y into 10 is also a step. I use y into 10. Okay, let's just copy this here. And after this, at the end, we'll just go into x is equals to 10 and maybe return y. Let's just run the test cases. See if it passes or not, but it's not working in the case of negative numbers. Okay, so if x is less than 0, x into minus 1, or maybe you can do t. Okay, and then replace x with t everywhere, and in this way we can handle the negative. And again, we'll, if x is less than 0, return minus 1 into t, else return t. Does that handle the negative edge case? Of course it does not. So what is t? T is equals to x. Now it's wrong for expected output. My output is 0. Let's do one thing. So where is the error? Yes, I just want to pass now. Does it not? Am I doing a foolish mistake somewhere? All the test cases are wrong. Why? Let's do one thing. T is equals to mod of x. Does this make sense? I'm not sure. I'm not aware with the rules now. Very sure. हेलो, मैं ऑफिस में ही हो रहे. क्या हो गया? हाँ, जाना है क्या उधर? मतलब तू आ रहा है क्या साथ में?
नहीं नहीं, मतलब मैं, मेरा डिपेंड करता है ब्रो, तू आ रहा होगा तो मेरे को कोई इशू नहीं है। अरे भाई मेरे को बता दे सोच के पहले यार। तू सोच ना फिर अभी बैठ के। अबे वो यार, तू कितने देर वेट करवाएगा, मैं अभी निकलने वाला था इसलिए बोल रहा हूँ। निकलने वा... हाँ। अरे यार, ठीक है चलेगा। क्योंकि मैं सोच रहा था फिर अगर तू नहीं आने वाला है तो मैं खाना उनके साथ ही खा लेता। हम्म। हम्म। ठीक है। ओके। x is less than, if x is less than 0, then t is equals to x multiplied by minus 1 plus t is equals to x. Yeah, and again we'll check. It should work properly, right? It's not. So what's the reason? If I'm going to do this, it will give wrong answer for all the text. There is an issue with this thing. Return t. Let's see. T. Why is that? Let's see. Before we introduced t, before the introduction of t, okay. पर ऐसा टाइप किया मैंने, इधर टी रिटर्न नहीं करना मेरे को, वाई रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, वाई रिटर्न करना है। तो मैंने सारे कंडीशन बिल्कुल करेक्ट लिखे थे, सारे कंडीशन बिल्कुल करेक्ट ही लिखे थे। बस यहाँ पर माइनस वन से इंटू वाई करना था या तो फिर वाई करना था, चीज़ें गलत रिटर्न करूँगा। ओके, एच की सिस पर आई थिंक सो सबमिट हो जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स है एंड नंबर्स कितने बड़े हो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ फर्क पड़ता होगा। लेट्स सी। लेट्स सी। तो गलत ना हो गया होगा, मैं सबमिट कर दूंगा। बट प्रॉब्लम ये है कि एक काम करते हैं, चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं ले रहा चैट जीपीटी की, बट पहले मैं बताऊँ, द डोमेन ऑफ द इनपुट इज दिस, raised to the power, and इधर भी 2 raised to the power, and the code that I have written in Python is this. Do you think my code will be able to handle the input domain? Okay, it does not fully handles the domain. Okay, if the reverse ending exceeding the range is nine, the code does not. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? What's missing? Overflow check after reversal 32 bit की
एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके, मैं मॉड लगा रहा था, उसकी जगह हम एब्सोल्यूट लगाएंगे। सिंस आई एम नॉट, ये चीज़ हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्प्रूवमेंट हम ये कर सकते हैं। ओके, ओके, सो उन्होंने काफ़ी कुछ सिंपल कोड दे दिया है, तो ये करने के बजाय व्हाट वी कैन डू इज, हमने हाँ सिंपल कर दिया चीज़, राइट। तो ये चीज़ करने के बजाय हम क्या बोल सकते हैं, टी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। दूसरी चीज़ ये कि अगर एफ इज इक्वल टू ये है, तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं माइनस वाई, नहीं तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं वाई। हमको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। और इसमें लॉजिक में इन्होंने कुछ हैंडल किया है क्या, सिर्फ ये चीज़ है। ओके, ये डबल डॉट है, ये फ्लोर वैल्यू लेता है, सिर्फ फ्लोर वैल्यू इंस्टेड ऑफ। ये चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं डिवाइड करने के बजाय फ्लोर वैल्यू। तो नम वाई इंटू नम, वाई इंटू टेन प्लस नम। ओके, हाँ हाँ हाँ, इन्होंने इसको ऐसे हैंडल किया है, तो हम यहाँ पर ही हैंडल कर सकते हैं और इस चीज़ को फ्लोर डिवीजन करने के लिए बोल सकते हैं। नॉट वेरी फेमिलियर विथ इट, आदत छूट गई है, 2 साल पहले किया था करके, कितना टाइम लग गया। रन करते हैं, टेस्ट केसेस पास होंगे क्या, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, जस्ट सबमिट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, एंड मेरे टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे हैं। सो आई गेस 9, अच्छा, ज़ीरो एक्सपेक्टेड करने के लिए बोला था ना, तो आई थिंक मुझे एक कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, ये कंडीशन भी मुझे लगानी पड़ेगी कि इफ आई एम एनकाउंटरिंग दिस इशू समवेयर, so that is how I am going to handle it। रन किया, सबमिट किया, एक्सपेक्टेड ज़ीरो था, मैंने रिवर्स करके दे दिया, तब भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। सो डिस्क्रिप्शन चेक करते होगा, इफ रिटर्न ज़ीरो। सो हमारा जो रॉन्ग आंसर आया था, इनपुट अगर ये हमारा जा रहा है, the our input gives the, क्या आंसर क्या दे रहा है वो, हाँ रिवर्स करके दे रहा है, बट वी वांट ज़ीरो, एक्सपेक्टेड इज ज़ीरो, है ना। बाकी सब तो इट हैज़ केप्ट द सेम, चेक इफ द रिजल्ट इज विद इन, ये तो मैंने चेक किया है ना ऑलरेडी। दिस थिंग इज आई हैव ऑलरेडी चेक्ड, am I correct? This thing is already corrected, so if it is less than zero, okay, so it's just returning this, no. So let's move it upside now. हेलो, हाँ रात में 12 बजे तो नहीं निकलूंगा मैं भाई, 12 बजे तो सेलिब्रेशन होगा, उसका बर्थडे है 12 बजे। हम्म,
नहीं क्या? ठीक है ना। चलेगा, ओके। वह तू दीदी के घर नहीं जा रहा क्या तू? मतलब संडे सुबह जाएगा? अच्छा, तो फिर सैटरडे सैटरडे पूरा दिन इधर रुक, मतलब सैटरडे शाम को इधर रूम पे रुकेगा तुषार के? हम्म। ओके ओके ओके। चलेगा। मैं मैं 8 तो बज गए। ठीक है, खाना खा के जाता हूँ। चले चलेगा वैसा। ओके, तो हाँ। ठीक है। सो सक्सेसफुली पहला प्रॉब्लम, कोडिंग प्रॉब्लम ने सॉल्व कर दिया है थोड़ी हेल्प के साथ। बट दिस इज़ नॉट वेरी ऑप्टिमाइज। ओके, तो उसको ऑप्टिमाइज और कैसे हम कर सकते हैं? इसको ऑप्टिमाइज करने का और क्या तरीका हो सकता है? तो लेट्स आस्क चैट जीपीटी। हमको ज़्यादा मालूम नहीं है। हाँ, चैट जीपीटी को पूछने से अच्छा हम ऊपर काम कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग चैट जीपीटी, व्हाई नॉट जस्ट गो हियर एंड कोड कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे। फाइव ऑफ वन वीडियो एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जाएंगे, बट ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम हो सकता है। एग्जाम्पल वन ऑप्टिमल अप्रोच तो हमारी यही रहेगी कि इसको परसेंटेज परसेंटेज करते जाओ और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके वो डिजिट ऐड करते जाओ। So why did it took 46 milliseconds to be solved? Was our internet was not fast enough or what? I'm not sure. But it took me 32 minutes. Freaking 32 minutes to solve one problem. हाँ, क्या होगा मेरा? ऐसे तो हो गया फिर डीएसएमआर से। Hmm. Okay. Let's read the editorials. Python 3. So what have they done is there are two numbers. Reverse is equal to 0, which is 1 in our case, and x is also absolutely the t in our case, while t x and mod gives div mod. What is this div mod and how can this be more optimal? X comma mod is equal to div mod x comma 10, and I don't know what div mod does. Okay, div mod in Python. What does it do? Function Python takes two numeric arguments, dividend and division, and returns the tuple containing the question and reminder. Okay. Okay, so he has used an inbuilt function. The question would be this, reminder would be mod, reminder को ऐड किया, चेक किया, देन साइन के साथ मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। हाँ, so is this optimal? Not sure. So while loop इसमें भी यूज हुआ है and they have used that. I don't know if it's optimal or not. I wanted an optimal solution. Since we're not able to find it, let's see what ChatGPT can do. Can you optimize? Yes, your code is quite already clean, but slight optimization is necessary. Uh, it, it
I've just restructured the code and there is no further optimization for this. What I'll do is just copy this thing and paste it as it is. Let's solve it twice now. What does it matter? From this to that. Okay, let's submit it. Much faster. I don't think there is anything different that they have done. भाई उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में चल रहा था वैसे इफ उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया है या इसका एक वन लाइनर इफ एल्स लिखा है इधर भी instead of using two lines they have used one liner only. So div mode we use what if I use a div mode minus one comma one x is less than zero. हेलो हाँ हाँ अरे वो योगेश्वर बोल रहा है खाना खा के जाओ साथ में हाँ खाना खा के जाऊंगा आऊंगा तुम्हारे पास हाँ टाइम लगेगा फिर थोड़ा so this is how it is solved. ठीक है एक क्वेश्चन कंप्लीट डेली का टास्क मैंने सेटअप किया था डीएसए का तो नहीं जाने दो बट आई थिंक टुडेज डीएसए प्रॉब्लम के अंदर ड्राइवर्स का तो कंप्लीट हो गया एंड नाउ आई थिंक आई शुड पेस्ट दिस सॉल्यूशन टू माय गिटहब रिपॉजिटरी उसके लिए वो भी देख लेते हैं कैसे गिटहब पे सेव करते हैं तुम देख लो आज गिटहब पे I'll go for a new repository. We'll paste daily का lead code daily. Okay. Description solve lead code problems. Clearly daily. Okay. Try to add a readme. यार हेलो मेरे को 1 घंटा तो लगेगा यार खाना वाना खाने में हाँ Okay, now I am going to create this repository. Repository has been created. I'll just add a collaborator. Oh, password कर रहा हूँ दिखेगा तो नहीं है ध्यान दे ये यहाँ पर मुझे कोलैबोरेटर ऐड करना है तो ये चीज़ ज़रा मैं दिखा नहीं सकता कोलैबोरेटर किसको ऐड कर रहा हूँ मैंने कोलैबोरेटर ऐड कर दिया है एंड आफ्टर एडिंग द कोलैबोरेटर मुझे एक रिक्वेस्ट गई होगी उस रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करूँगा व्हाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज द थिंग इज मुझे मेरे वी एस कोड में थोड़ा दूसरा वाला लॉगिन है और वो मेरे थोड़ा थोड़ा पर्सनल लॉगिन है उनको मैं उसमें फ़िलहाल नहीं कर सकता ठीक है तो कोलैबोरेटर मैंने ऐड कर दिया है इनविटेशन भी एक्सेप्ट कर लिया है व्हाट आई कैन डू नाउ इज गिटहब पे मैं अब काम कर सकता हूँ यार दिख ही गया ना तुमको कोलैबोरेटर मेरा चलो ठीक है ऐसा भी कुछ इशू नहीं हो प्राइवेट रिपोजिटरीज रहती है मैंने कोलैबोरेटर ऐड कर दिया है जैसे कि तुम सब देख सकते हो व्हाट आई विल डू इज go to code paste copy this in this VS code no since windows अगर डीप में जाऊंगा यहाँ पर मैं
नया फोल्डर बनाऊंगा और इस फोल्डर का नाम रखूंगा जो भी है, इसको बाद में नाम रख दूंगा। इसको फिलहाल मैं यहाँ पर ओपन किया, टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैंने जो कोड कॉपी किया है उसको मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन हो गया मेरा। इश, जाने दो, तुमको थोड़ा सा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिख रहा है मेरा, बट दिखने में यार अब क्या है, अगली बार मैं ट्राई करूँगा अपनी ना दिखे। बट यहाँ पर मुझे गेट क्लोन करना है, दिस भी क्लोन हो जाएगा लीड कोड डेली। ओके, अब मुझे इसके अंदर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट करूँगा डे 1। अरे बाप रे, गलत फाइल क्रिएट कर दी। इसको मैं रीनेम करूँगा, इसको रीनेम करके मैं डालूँगा day1.py। day1.py के बाद आई जस्ट कॉपी दिस function and nothing else। okay, not this one। सबमिशंस में जाके ये वाला कॉपी करूँगा मैं, बिकॉज अपन का यही कोड है। इसको कॉपी करूँगा, इस सॉल्यूशन को हटा दूंगा, इसको सेव करूँगा। इसमें इंडेंटेशन अगर एरर है तो वो इंडेंटेशन एरर रिमूव करूँगा, सेव करूँगा। और यहाँ पर क्या करूँगा, गिट स्टेटस देखूँगा, एक ही है, गिट को ऐड करूँगा, गिट कमिट -m day 01। यहाँ पर थोड़ा सा एक कमिट करने से पहले मुझे कुछ लिख देना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगी अगर तो बेटर रहेगा। डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ ऐड कर देता हूँ कि हमको एक रिवर्स करना है नंबर। इंसर्ट में होम पे जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इस पूरे को कमेंट करके रख देंगे। This one is also commented and this one is also commented। अब हम वापस से गेट स्टेटस करेंगे तो हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। गेट ऐड -a। अब गेट स्टेटस करके चेक किया तो हमारी फाइल मॉडिफाइड हो चुकी है। गेट कमिट करेंगे हम -m के साथ डे 01 REVRSC नंबर। इसके बाद गेट ब्रांच बनी है क्या, हमारी बनी है। गेट पुश ओरिजिन में क्या हमारा कोड चला जाएगा, हमारा कोड जा सकता है। और हाँ बिल्कुल, रिफ्रेश करने के बाद चला जाएगा। day01.py हमारे यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ बहुत ही आसान था गिटहब पे अपलोड करना, तो तुमको पता भी चल गया गिटहब का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम चुटकियों में कुछ भी सेव करने के लिए। वो बात रही, इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रोजेक्ट, बट दिस इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फाइल सेव करी जिसके अंदर सिर्फ कोड है, वो कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं है फिलहाल, उसके लिए बाकी इनपुट एंड आउटपुट सब लिखना पड़ेगा, मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। दिस कोड इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल, दिस इज़ ओनली अ फंक्शन, तुम देख सकते हो। तो ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे, बिकॉज आई रियली वांट माई सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट। ओके, इसको नहीं दिखाऊंगा वरना मेरा ऑफिस वाला ईमेल दिख जाएगा सबको, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एटलीस्ट स्ट्राइवर हो गया है, इसको डिलीट करने के बजाय स्टेप को डिलीट कर देता हूँ एंड स्टेप को पोस्ट ऑन एक्स को भी डिलीट कर देता हूँ। पोस्ट ट्रैवल गिटहब
and reading GitHub and post on X. पोस्ट ड्राइवर गिटहब हमारा कंप्लीट हो चुका है। पोस्ट ऑन एक्स हम बाद में करने का ट्राई कर सकते हैं। यूडेमी गिटहब बाकी है, वो मैं विदाउट लाइव करूँगा बिकॉज मेरे को अभी जाना है। ठीक है, अभी जाना है अभी, सो मैं बिना थोड़ा बाद में कर लूँगा। बाकी जैसा कि तुम देख सकते हो, कोड हमारा हो चुका है। जो कोड है वो हमारा जा चुका है, फर्स्ट वाला। अब मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रोजेक्ट वाला कोड मैंने आज नहीं किया है, वो वाला टास्क मुझे कंप्लीट करना है। बट आई डोंट नो तुम्हारे मौजूदगी में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तुमको मेरी आईडी मिल गई होगी, दिस इज माई आईडी, कोड इन 666, यहाँ जाके चेक कर सकते हो। एंड आई गेस इट्स टाइम टू से गुड बाय। 45 मिनट्स की पहली स्ट्रीम करी है मैंने। नाइस, लेट्स स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन। और उसके बाद अब हमारा जाने का वक्त हो गया है। बाय बाय।